Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to understand what is elasticity of demand and what are the different types of elasticity of demand. So before start the video, it's my humble request to everyone, those who are new on my channel, please like, share, comment and subscribe it. If you really like it, then share to your friends also. जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, please do it as soon as possible. So we'll start with the elasticity of demand. The concept elasticity of demand put forward by Alfred Marshall. Before that, Alfred Marshall already given law of demand. Then why after law of demand the concept of elasticity of demand he has given? The reason behind it, law of demand was a qualitative concept. It means that as per statement of law of demand, when price rise, demand fall, price fall, demand rise. But they have not given the percentage and measurement कि कितना price बढ़ेगा तो कितना demand कम होगा. So law of demand is a qualitative concept which is criticized by so many economists. So after that, Alfred Marshall introduced the concept which is known as elasticity of demand. And elasticity of demand is quantitative concept. Elasticity of demand means what? Percentage change in demand due to percentage change in any one factor affecting demand. Elasticity of demand means percentage change in demand due to percentage change in any one factor affecting demand. Any one factor means price, income, relative price, advertisement, etc. So elasticity of demand expressed by ED. Elasticity of demand means the ratio of percentage change in demand due to percentage change in any one factor affecting demand. In simple term, percentage change in demand upon percentage change in any one factor affecting demand. Then there are main four types of elasticity of demand: price, income, cross and promotional. So we'll do one by one all the elasticity of demand and their degrees. So first we'll start price elasticity of demand. Price elasticity of demand expressed by EP. Price elasticity of demand means percentage change in quantity demand of commodity due to percentage change in price of commodity. A price elasticity of demand means percentage change in quantity demand of commodity ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसका मतलब है अगर प्राइस में 10% चेंज होता है तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज होगा, ये मेजर करने के लिए वी फॉलो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. To express price elasticity of demand, the formula is delta Q upon delta P multiply P upon Q. Students, soon I am going to upload videos on practical sum on price, income, cross and promotional elasticity also. Now we are just learning the theoretical part of elasticity of demand. So price elasticity of demand means percentage change in quantity demand of commodity due to percentage change in price. Now, there are delta Q means change in quantity, delta P means change in price, P means original or old price, Q means original and old quantity. Now, there are total 5 degrees of price elasticity: perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, relatively inelastic, and relatively elastic. So, we'll understand one by one. First is perfectly elastic demand. Now, what is the meaning of perfectly elastic demand? Perfectly elastic demand means when percentage change in price is small but change in demand is infinite. मतलब अगर प्राइस थोड़ी भी चेंज हो गई तो डिमांड आपकी इन्फिनाइट चेंज होगी. दैट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इट इज इंडिकेट बाय ई पी इक्वल इन्फिनाइट. देखो प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो रहा है बट डिमांड ज़्यादा हो रही है. तो हियर व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड का? दैट इज हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. In perfectly elastic demand, the shape of demand curve is horizontal straight line parallel to x axis. देखो perfectly elastic demand is example of perfect competition. Perfect competition में we know very well कि large number of sellers are there. So when and generally the prices are fixed. But if there is a small changes of price done by a firm, then there will be infinite change in demand, because in a perfectly elastic demand there are large number of seller. So in perfectly elastic demand, if there is a small change in price, demand will change infinite. The shape of demand curve is perfectly elastic, or we can say horizontal straight line parallel to x axis.
Generally, in perfectly elastic demand, there is no proper example, but we can take example of a stock market, foreign exchange market, then we can say एग्रीकल्चर मार्केट। सी स्टॉक मार्केट में भी आपने देखा है, अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज होता है तो डिमांड इन्फिनाइट चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज perfectly inelastic demand. Now perfectly inelastic demand means when change in price, percentage change in price bring no effect in a demand, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग नो इफेक्ट इन अ चेंज इन डिमांड। इसका सिंपल मतलब है कि प्राइस भले कितना भी चेंज हो, कम हो ज़्यादा हो, बट आपका डिमांड कांस्टेंट रहेगा। सो ईपी इक्वल जीरो। What is the shape of demand curve? Horizontal straight line. The shape of demand curve is horizontal straight line. Example, the price of commodity is OP. Demand remain OQ only. Price of commodity increase from OP to OP1. Demand for commodity remain OQ only. Price of commodity decrease from OP to OP0. Then also demand for commodity remains same. So perfectly inelastic demand का मतलब होता है प्राइस में कितना भी चेंज हो आपका डिमांड कांस्टेंट रहेगा। इट इन दिस केस वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ मेडिसिन एंड सॉल्ट। अगर समझो मेरा इनकम समझो कि एक सॉल्ट के पैकेट का प्राइस है 50 रुपया एंड वी कंज्यूम वन पैकेट ऑफ सॉल्ट फॉर 1 मंथ। तो अगर 50 से 60 रुपया हो गया तभी भी मेरा डिमांड वही रहेगा, और 50 से अगर 20 रुपया हो गया सॉल्ट के पैकेट का पाक तभी भी मैं एक पैकेट ही कंज्यूम करूंगी। सो डिमांड फॉर सॉल्ट एंड मेडिसिन रिमेन सेम इवन दो प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज। Next is relatively elastic demand. Relatively elastic demand means percentage change in quantity demand is greater than percentage change in price. EP greater than 1. Still, relatively elastic demand generally applicable in which kind of commodities? When commodities are luxuries. So, आपका समझो कि प्रोडक्ट का प्राइस है ओपी और डिमांड आपका है ओक्यू। ठीक है, अभी समझो और सिंपली हम बोल सकते हैं जस्ट फॉर मिनट। ठीक है, अभी देखो कि relatively elastic demand, percentage change in demand is greater than percentage change in price, EP greater than 1। एग्जाम्पल देखते हैं, समझो कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस है ओपी और आपका क्वांटिटी डिमांड है ओक्यू। सडनली आपका प्राइस हो गया कम, दैट बिकेम ओपी टू ओपी वन, बट आपका डिमांड कितना बढ़ गया है ओक्यू से ओक्यू वन। तो प्राइस में कितना चेंज हुआ है, सिर्फ इतना। डिमांड कितनी चेंज हुई है, इतनी। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जनरली इट इज हैपन व्हेन कमोडिटीज आर लग्जरीज इन प्रोडक्ट, लग्जरीज इन नेचर। सी आपने देखा होगा कि जब भी ब्रांडेड कमोडिटी या ब्रांडेड गुड्स पर सेल लगता है तो प्राइस कम चेंज होता है बट डिमांड ज़्यादा चेंज होती है। थोड़ा भी लग्जरी प्रोडक्ट्स का प्राइस कम हो गया तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं। नेक्स्ट इज relatively inelastic demand. In relatively inelastic demand, percentage change in quantity demand lesser than percentage change in price, EP less than 1। This is possible in case of like a gas cylinder, electricity, etc. In such kind of commodities, for example, एक आपका सिलेंडर का प्राइस था 900 रुपया, so we were using one cylinder for 30 days. Now the price of cylinder became 600 rupees, so we are going to use one cylinder for 25 days। मतलब प्राइस कितना कम हुआ है 300, बट हमने कंजम्पशन उसका ज़्यादा कम नहीं किया, क्योंकि देखो अगर सिलेंडर का प्राइस कम हुआ इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा दिन सिलेंडर यूज़ करेंगे। नो, अर्लियर आई वाज यूजिंग सिलेंडर फॉर 30 डेज बिकॉज प्राइसेस वर 900, बट नाउ आई एम यूजिंग सिलेंडर फॉर 25 डेज बिकॉज द प्राइसेस बिकेम 600। सो प्राइस ज़्यादा चेंज हुआ है बट डिमांड कम चेंज हुई है। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझो आपका प्राइस है ओपी, क्वांटिटी है ओक्यू, अभी प्राइस आपका कम हो गया है OP1, बट क्वांटिटी कितना बढ़ा, ओनली OQ1। क्योंकि देखो प्राइस यहाँ ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी कम चेंज हो रही है। सो व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड का हियर, दैट इज लेस इलास्टिक और वी कैन से स्टीपर। सेम हियर, if I'm going to talk about here, in relative elastic demand, the shape of demand curve is flatter. The shape of demand curve is flatter, more elastic. So in relative elastic demand, the shape of demand curve is a flatter, more elastic. In relatively inelastic demand, the shape of demand curve is a steeper, less elastic. Next is unitary elastic demand. Unitary elastic demand means percentage change in quantity demand equal to percentage change in price. That is EP equal
1. So the price and quantity demand both will change in a equal proportion. So what will be a shape of demand curve here? That is rectangular hyperbola. This concept given by unitary elastic demand, given by whom? That is Alfred Marshall. See, it is a theoretical concept, so practical example is not there. Unitary elastic demand means percentage change in quantity demand equal to percentage change in price. Next is income elasticity of demand. See, income and demand both are having direct relationship. So when income rise, demand also increase. Now, income and demand both are having positive relation. Income elasticity of demand means percentage change in demand, the ratio of percentage change in demand due to percentage change in income. The ratio of percentage change in demand due to percentage change in income. It is expressed by EY. Income elasticity of demand means delta Q upon delta Y multiply Y upon Q. Then delta Q means change in quantity, delta Y means change in income, Y means original income, and Q means original quantity. Now there are total 5 degrees of income elasticity: unitary, greater than 1, less than 1, 0, and 0, or we can say, just for a minute, student, 0, and we can say negative. Now we understand one by one. See, unitary income elasticity means what? Unitary income elasticity means percentage change in demand exactly equal to percentage change in income. जिस परसेंटेज से आपका इनकम बढ़ेगा या कम होगा, उसी परसेंटेज से आपका डिमांड भी कम होगा या ज़्यादा होगा. सो इट इज एक्सप्रेस बाय EY इक्वल 1. EY इक्वल 1. अगर आपका इनकम 10% राइज होता है तो डिमांड भी आपका 10% राइज होगा. But in real life, it is not possible. It is just a theoretical concept. Next is इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी. इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 भी लिख सकते हो आप लोग. इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी मीन्स EY greater than, sorry, income elasticity greater than 1, extremely sorry, income elasticity greater than unity, or you can write income elasticity greater than 1. So EY greater than 1. Percentage change in demand greater than percentage change in income. इनकम ज़्यादा बढ़े, इनकम आपकी कम बढ़ रही है बट डिमांड आपका ज़्यादा बढ़ रहा है. समझो आपका इनकम 10,000 था, अभी 30,000 हो गया है. तो पहले आप डिमांड करते थे 10%, अभी आप 40% डिमांड कर रहे हो. सो द पॉइंट इज व्हाट, इनकम आपका कम चेंज होता है बट डिमांड आपका ज़्यादा चेंज होता है. इट इज़ पॉसिबल इन विच काइंड ऑफ कमोडिटीज, व्हेन कमोडिटीज आर लग्जरी इन गुड्स, लग्जरी इन नेचर. सी, आपने देखा होगा कि समझो अगर आपका थोड़ा बहुत भी इनकम बढ़ता है, नाउ सपोज योर इनकम इज 30,000, सो यू आर एबल टू कंज्यूम ऑल द नेसेसरी गुड्स. जैसे ही आपका इनकम थोड़ा सा भी बढ़ता है, सो देन यू विल मूव टूवर्ड द लग्जरी प्रोडक्ट. आपका इनकम थोड़ा भी बढ़ेगा तो आपका डिमांड जो लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए वो ज़्यादा होगा. सो दैट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1. Next is income elasticity less than unity, or you can write income elasticity less than 1. So EY less than 1. Percentage change in demand less than percentage change in income. Income आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड आपका कम बढ़ेगा. It is possible in which kind of commodities, when commodities are necessary in a nature, like food grain. समझो मेरा इनकम 30 से 50 हजार रुपया हो गया. सो पहले मैं 10% कंज्यूम करती थी, अब मैं 15% कंज्यूम कर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितना खाऊंगी. पहले मैं सिर्फ नॉर्मल फूड ग्रेन यूज़ करती थी. नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन माई इनकम आई विल ऐड सैलेड इन माई फूड, आई विल ऐड डेजर्ट इन माई फूड, बट आई विल नॉट कंज्यूम मोर, आई कैन नॉट कंज्यूम मोर फूड ग्रेन. सो द पॉइंट इज वॉट, कि कुछ केसेस में कैसा होता है, आपका इनकम ज़्यादा बढ़ता है बट आपका डिमांड कम बढ़ता है. सो दैट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी. ये कब पॉसिबल है, जब आपकी कमोडिटीज नेसेसरी टाइप की हो. नेक्स्ट इज income, zero income elasticity. Zero income elasticity means EY equal 0. Zero income elasticity means percentage change in income has no impact on change in demand. आपका इनकम कितना भी बढ़े बट आपका डिमांड सेम रहेगा. एग्जाम्पल, मेडिसिन एंड सॉल्ट. सी, जब मेरा इनकम 10,000 था, सो दैट टाइम आई वॉज कंज्यूमिंग वन पैकेट ऑफ सॉल्ट फॉर अ मंथ. नाउ माई इनकम बिकेम 50,000, देन ऑल्सो आई कंज्यूम वन पैकेट ऑफ सॉल्ट ऑफ one packet of salt for a month. Now my income decrease, then also I'll consume one packet of salt for a month. So भले इनकम आपका बढ़े या कम हो, आपका डिमांड जो रहेगा वो सेम रहेगा, फॉर मेडिसिन हुआ या सॉल्ट हुआ. Next is negative income elasticity. Negative income elasticity means what? EY
लेस देन जीरो, और वी कैन से ई वाई, अब ई वाई जो है वो जीरो से कम है. इन नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी देर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड. सी जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, आपका जो डिमांड है इंफीरियर गुड्स का वो कम होते जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पहले इनकम 10,000 था तो हम लोग मार्केट में लेट जाते थे जिससे सस्ते में सब्जी मिले, सो वी विल कंज्यूमिंग inferior type of vegetables. Now as income increase, will move toward the superior kind of vegetables. So जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, डिमांड फॉर inferior goods कम होता जाएगा. So in negative income elasticity, the relation between income and demand is negative. Next is क्रॉस elasticity of demand. क्रॉस elasticity of demand का मतलब क्या होता है? Cross elasticity of demand expressed by EXY. Cross elasticity of demand means percentage change in quantity demand for X commodity due to percentage change in price of Y commodity. See, cross elasticity of demand applicable when commodities are related in nature. Example, either substitute or complementary. So, in cross elasticity of demand, percentage change in demand of one commodity due to percentage change in price of other commodity. Simple example लेते हैं. Percentage change in a price of percentage change in demand of tea due to percentage change in price of coffee. Now the formula for cross elasticity is delta qx upon delta py multiply py upon qx. Change in a quantity of x commodity due to change in price of y commodity, then price of y commodity एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी. सी ये फॉर्मूला सेम आपको प्राइस इलास्टिसिटी की तरह है, सिर्फ आपको क्यू के साथ एक्स लगाना है और पी के साथ वाई लगाना है. सो नाउ देर आर थ्री डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी: पॉजिटिव इलास्टिसिटी, negative elasticity and zero elasticity. So we will understand one by one. Positive cross elasticity possible when commodities are substituted in nature. Positive cross elasticity possible when commodities are substituted in nature. In positive cross elasticity, we'll take example of coffee and tea. So when price of one commodity increase, demand for other commodity increase. Example, earlier price of coffee is OP, demand for tea is OQ. Now price of coffee became OP1, demand for tea became OQ1. बिकॉज अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो हम क्या कंज्यूम करेंगे? टी. सो बोथ आर विच काइंड ऑफ कमोडिटी? Substitute goods. So what is the shape of demand curve? That is upward sloping. So positive cross elasticity possible when commodities are substituted in nature. In positive cross elasticity, example is coffee and tea. So when price of one commodity increase, demand for other commodity increase. So both are having positive relation. So the shape of cross elasticity is positive in nature. Next is negative cross elasticity. Negative cross elasticity possible when commodities are complementary in nature. Example, car and petrol. So when price of one commodity increase, demand for other commodity decrease. Example, when price of petrol is OP, demand for car is OQ. When price of petrol became OP1, demand for car decrease, it became OQ1. So जैसे ही पेट्रोल का भाव बढ़ा, डिमांड जो कार का है वो कम हो गया. So both are having negative relation. So the shape of cross elasticity is downward sloping. Negative cross elasticity possible when commodities are complementary in nature. Example, car and petrol. पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी. सो जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी पॉसिबल व्हेन कमोडिटीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब एक का अगर प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसका दूसरे की डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग आई हैव टेक एग्जांपल ऑफ अ प्राइस ऑफ शुगर एंड डिमांड फॉर car. So when price of sugar OP, demand for car is OQ. When price of sugar increase from OP to OP1, demand for car is OQ. When price of sugar decrease from OP to OP2, कार डिमांड फॉर कार इज OQ ओनली. सो भले शुगर का प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, जो डिमांड है कार का वो उतना ही है, बिकॉज बोथ कमोडिटीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. सो चेंज इन अ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डज नॉट अफेक्ट द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी. So what is the shape of cross elasticity? That is vertical straight line parallel to y-axis. Next is promotional elasticity of demand. Promotional elasticity of demand is also known as advertising elasticity of demand. Promotional elasticity of demand expressed by EA. Promotional elasticity of demand means percentage change in demand, or you can write
परसेंटेज चेंज इन सेल ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। सी जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना सेल भी बढ़ता है, ऑटोमेटिकली डिमांड भी बढ़ती है। अभी आपने देखा होगा कि वेन एवर देर इज अ रक्षाबंधन और वी कैन से दिवाली फेस्टिवल और एनी काइंड ऑफ फेस्ट यूज टू कम, so advertisement of dairy milk increase. So when advertisement of dairy milk increase, automatically the sale of dairy milk product also increase. So promotion elasticity of demand means जितना आप एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करोगे उतना आपका सेल और डिमांड बढ़ेगा। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। सो द formula for promotional elasticity is delta Q upon delta A multiply A upon Q. Change in a quantity, change in advertisement expenditure, original advertisement expenditure or original quantity. So these are the types of elasticity I have explained. I hope you will understand. This topic is very important from exam point of view and we should know about it. Same, those who want practical mathematical sum on all kind of elasticity of demand, please put in a comment box. So I'll make a video on that also. Till then, please watch entire video. God bless you. God bless you. And thank you so much.